डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइटल फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, you know that India is rich with biological diversity. India is the mega diverse country. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि there is an international organization called IUCN. IUCN is in fact stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Dear students, this organization, पहले मैं इस organization की बात करता हूँ. Why it was established? When it was established? It was established in 1948 and its headquarters is in France. It is in fact a World Conservation Union. This IUCN is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. Dear students, according to IUCN, India is the mega diverse country with only 2.4% of world land area. Accounts for 7 to 8% of all recorded species, including species of plants and animals. जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है कि इंडिया इज रिच विथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज. 7 to 8% of the total flora and fauna are in India. Dear students, although India is rich in biological diversity, but still in current era we are observing that India's biodiversity is in danger. It is in danger due to various reasons. Dear students, let's understand the different categories of existing plants and animals species based on IUCN classification. First, we will discuss normal species. Normal species are those species whose population are considered to be normal for their survival, such as cattle, sow, swine, rodents, etc. Dear students, अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं, इनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हम पहले इस कैटेगरी में रखते हैं नॉर्मल स्पीशीज. IUCN ने एक क्लासिफिकेशन हमें बताया है. अकॉर्डिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन, देयर इज वन कैटेगरी ऑफ स्पीशीज दैट इज नॉर्मल स्पीशीज. इन नॉर्मल स्पीशीज जिनका तादाद नॉर्मल हो, दे आर नॉट एट डेंजर लेवल, जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल हो, they are called normal species. Another category of species is dear students, endangered species. These are the species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continues to operate. Dear students, endangered species are those species वो स्पीशीज जो विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, जो खत्म होने के कगार पे हो, जिन ऑलमोस्ट दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन. अगर जो भी नेगेटिव प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहे, अगर हम इनका इन नेगेटिव प्रैक्टिस का तोड़ नहीं निकाल पाए, तो these species, endangered species, इनका ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज होगा. इनमें से फॉर एग्जांपल आते हैं
black buck, crocodile, Indian wild oss, Indian rhino, lion, tailed sengai. Dear students, another category of species is vulnerable species. Dear students, vulnerable species are, as far as these vulnerable species are those species whose population has declined to level from which it is likely to move into the endangered categories in the near future if the negative factors continues to operate. Vulnerable species वो species है वो species which whose population has declined, जिनकी population जो at the level उस लेवल पे पहुंचे हैं कि अब वो endangered कैटेगरी में जा रही कैटेगरी लिस्ट में जा रहे हैं. अगर हम कुछ प्रैक्टिसों का तोड़ न निकाल पाए, से फॉर एग्जांपल हम पोचिंग करते हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनसे इन नेचुरल हैबिटेट्स का इनका साइज इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो, जैसे पोचिंग या डिफॉरेस्टेशन या अदर एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हम इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वो कानून नहीं इम्प्लीमेंट करें जिससे इनकी हिफाजत हो, तो ये vulnerable categories of species they will include in the list of endangered species. Another category of species is rare species. Rare species are the species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continues to operate. The example of such species are Himalayan brown bear, Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. Another category of species is endemic species. Both species which are only found in some particular areas. Endemic species जो किसी खास एरिया में पाए जाते हो. फॉर एग्जाम्पल इनमें है निकोबार पिजन, इंडोमान वाइल्ड पिग, मिथन in Arunachal Pradesh. These are the species which are found in some particular areas. Another category of species is that is extinct species. Extinct species are species which are not found after search of known or likely areas where they may occur. वो extinct species वो species की category जो ऑलमोस्ट जिनका अब नाम निशान नहीं रहा हो, जो जहां पे पहले हुआ करते थे अब वहां नहीं है, नहीं उनकी हैबिटेशन हो. They are extinct, they are called extinct species. For example, इनमें है Asiatic cheetah, pink-head duck. Dear students, these are some categories of species according to IUCN classification. I hope you have enjoyed it. I wish all the best.